करके हिसाब लगाऊं तो इस एक वीक में 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है जी। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है जी, और उसमें हर छोटे मोटे व्यक्ति की जिंदगी में कमाई होती है। और मैं इसी ताकत के आधार पर कहता हूं कि हम विकसित भारत की विषय को बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक विश्वास पैदा करना होता है। सकारात्मक चीजों से लोगों को किसी की वाहवाही करने की जरूरत नहीं है, असत्य को दबाने की जरूरत नहीं है। ऐसी चीजों को हम बल दे सकते हैं। और ये भी सही है कि विकास, आर्थिक बाबतें ये अब केंद्र में रहने वाली हैं आने वाले 25 साल तक, क्योंकि विश्व भी हमारा मूल्यांकन उस बात पर कर रहा है। और इन दिनों जहां हम हैं और जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, विश्व इसको स्वीकार कर रहा है। मैं अभी आपके बीच आया हूं, लेकिन मैं चुनाव के मैदान से नहीं आया, मैं ग्लोबल साउथ समिट में से आया हूं। 130 देशों का ग्लोबल साउथ समिट में होना, ये अपने आप में मैं मानता हूं, जो आपके यहां जो विदेश मंत्रालय की चीजें देखते होंगे, कि लगता होगा कि ये बहुत बड़ी बात है। यानी कुछ तो है जिसके कारण ये हो रहा है। हम 2047 विकसित भारत का मिजाज, अब देखिए दांडी यात्रा, भारत का मीडिया का ध्यान बहुत कम गया था। महात्मा गांधी जब दांडी, भारत में उस समय जो भी मीडिया पैदा हुआ था वो सिर्फ आजादी की लड़ाई के लिए पैदा हुआ था, वो अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए तैयार हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी उसको दांडी यात्रा की ताकत नजर नहीं आई थी। पहली बार जब एक विदेशी पत्रकार ने उसकी स्टोरी की, तो उसने बाद में लोगों को चौकन्ना कर दिया कि ये क्या हो रहा है। वरना लगता यही था कि यार एक छोटे से रूट पे 250 लोग चल रहे हैं और एक चुटकी भर नमक उठा के होना क्या है। लेकिन उस पत्रकार ने लिखा था कि ये कोई बहुत बड़े रिवॉल्यूशन का ये मजबूती है इसमें। और उसके बाद हिंदुस्तान के मीडिया ने भी उस चीज को, और वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बन गया कि जिसने देश को विश्वास पैदा कर दिया कि अब आजादी लेके रहेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि कोविड के संकट में दुनिया की तुलना में हमारा जो कुछ भी अचीवमेंट है, उसने भारत के लोगों में विश्वास पैदा किया है, दुनिया में भी पैदा किया है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। आप कैसे मदद कर सकते हैं, लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आगे बढ़ने के सपने। अब जैसे 13.5 करोड़ लोगों का 5 साल में गरीबी से बाहर आना, वो तो एक विषय है, लेकिन इतने परिवार जब न्यू मिडिल क्लास बनते हैं तो उसके एस्पिरेशन का लेवल अपर मिडिल क्लास का होता है। वो भी चाहते हैं मेरे घर में टीवी आ जाए, वो भी चाहता है अब पंखा नहीं एसी आ जाए, वो भी चाहता है चेयर नहीं सोफा आ जाए। जो उसके एस्पिरेशन है वो किसी की बराबरी में बैठने के होते हैं। वो चाहता है वो घर के बाहर साइकिल नहीं, अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा उसका इको इफेक्ट होता है व्यवस्थाओं पर। और वो इसको मैं मानता हूं आज जो इस दिवाली में इतना बड़ा मार्केट, उसके पीछे एक कारण ये एस्पिरेशनल सोसाइटी है जो बहुत तेजी से बराबरी करना चाहती है। और आज उसके जेब में बैंक अकाउंट है, रुपए कार्ड है, रेडी पटरे ठेले वाले लोग, उनको 2 राउंड 3 राउंड बैंक से लोन, सामने से मोबाइल फोन पे मैसेज आता है कि भाई तुम्हारा कारोबार अच्छा है, तुम और लोन ले लो। और एनपीए हार्डली 1%। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण मैंने कई बार आपने मुझे सुना भी होगा, लेकिन मैं दोबारा उसको रिपीट करना आपका समय ले रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश में शहडोल
क्षेत्र में गया था। दो चीजें मुझे बड़ी ही मैंने इंस्पायर कर गई। एक तो मेरा कार्यक्रम था, मैं एक आदिवासी गांव में समय बिताना चाहता था, तो मैं शहडोल के पास गया था। तो वहां जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसकी कुछ बहनों को उन्होंने बुलाया था और कुछ यूथ को बुलाया था, नौजवानों को। जब नौजवानों से मैं मिला तो मैंने पूछा, आपका गांव? तो बोले मिनी ब्राजील है। अब मैं इतने साल मध्य प्रदेश में संगठन का काम किया था, मैं मुख्यमंत्री रहा, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं था। तो मेरा कान सतर्क हो गया। मैंने कहा कि मिनी ब्राजील क्या है? बोले साहब, हमारे हर गली में फुटबॉल क्लब है, और बोले हमारे यहां, और एक कोई मुस्लिम सज्जन थे, नाम मैं भूल गया, वे पहले खेलते थे, फिर शायद उनको फिजिकल प्रॉब्लम हुआ, फिर वो कोच के रूप में काम कर, वो उस गांव के थे। उन्होंने इसको एक मिशन मोड में लिया, और परिणाम ये मुझे बता रहे थे कि साहब हमारे कुछ घर ऐसे हैं जहां की 4-4 पीढ़ी के लोग फुटबॉल के नेशनल प्लेयर रहे हैं। और बोले हमारे यहां गांव में जब फुटबॉल का फेस्टिवल होता है, ईयर में एक बार फेस्टिवल करते हैं, तो अगल बगल के 20,000 लोग तो दर्शक होते हैं। छोटे बच्चे फुटबॉल, 80 साल के बुजुर्ग फुटबॉल। मैंने कहा भाई मानना पड़ेगा, शायद ब्राजील में भी ऐसा नहीं होगा। अब ये हमारे देश की ताकत है। दूसरा, मैं उन महिलाओं को मिला, तो मैंने कहा भाई आप लोगों को बुलाया तो यहां सिलेक्ट कैसे कर लिया? तो बोले हमें बताया गया कि जो लखपति हैं वो आ सकते हैं। मैंने कहा ये क्या है? तो बोले हमारा जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हम किसी में 11 बहनें हैं, किसी में 13 हैं, और हम सभी लोग साल में 1 लाख से ज्यादा कमाने वाली बहनें हैं। अब ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, और उसी में से मैं इंस्पायर होकर के मैंने भी एक टारगेट तय किया है कि हम 2 करोड़ महिलाएं जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, 2 करोड़ लखपति महिलाएं बना का काम अचीव करके 2 करोड़ लखपति, ये ड्रीम देखने का इंस्पिरेशन मेरा वहां था। तो मैं, और अच्छा ये सारे लोग कोई 5वीं 8वीं 9वीं पढ़े हुए थे, कोई ज्यादा पढ़े नहीं थे। तो मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा बहन इतने पैसे कमा रहे हो तो क्या कर रहे हो? तो उसने कहा गहने खरीदे। मुझे था शायद पहला जवाब तो यही आएगा, और वो स्वाभाविक है, कोई मैं महिलाओं को न्याय नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्वाभाविक था, क्योंकि उसको सुरक्षा दिखती है उसमें। जीवन की सुरक्षा का वो एक साधन है उसके लिए, वो मौत का साधन नहीं है। हमारी ये गलत सोच है। उसको लगता है कि मेरे जीवन में संकट के समय ये काम आने वाला है, तो ये सोशल सिक्योरिटी है हमारे यहां। तो उसने मुझे कहा हमें गहने खरीदना है मुझे। कुछ मैंने गहने लिए हैं। फिर एक दूसरी महिला ने हाथ ऊपर किया। मैंने कहा आपने क्या किया? मैंने कहा आप क्या पढ़ी हैं? तो बोले मैं 8वीं या 9वीं कुछ बताया। 30-32 साल की उम्र होगी। बोले मैं लखपति दीदी हूं। मैंने कहा क्या करती हो, क्या किया पैसों का? बोले मेरे पति मजदूरी करते हैं और वो साइकिल पे जाते हैं, तो मैंने उनके लिए स्कूटी खरीदी और उनको गिफ्ट की। एक आदिवासी महिला मुझे कह रही है कि मेरे पति मजदूरी करने के लिए साइकिल पे जाते हैं, मैंने उनके लिए स्कूटी खरीदी। अब मेरे लिए साइकिल और स्कूटी नहीं है, मेरे दिमाग में स्थिर होता है कि मेरा देश की ताकत यहां है। ये एस्पिरेशन जो है ना, ये मिजाज है, वो मेरे देश को बदलेगा। फिर मैंने कहा आगे क्या हुआ उसका? बोले फिर मुझे किसी ने बताया कि हमको अब बैंक से लोन मिल सकता है, क्योंकि हम एक लखपति हैं, 2 साल से मैं इतना कमाती हूं। तो बोले मैं बैंक वालों से मिली। अब मुझे तो कुछ आता नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने, स्थानीय सरकार के किसी व्यक्ति ने मदद की। तो बोले मुझे पता चला कि मैं बैंक से लोन ले सकती हूं। तो बोले मैंने सोचा मैं ट्रैक्टर की लोन लूं। मैंने कहा ये हिम्मत कहां से आई तुम्हारी? कहां साइकिल, कहां स्कूटी और कहां ट्रैक्टर? बोले नहीं, बैंक से पैसा मिलता था और मुझे लगता था कि मैं पैसे दे दूंगी वापस।
तो बोले मैंने ट्रैक्टर लिया, मैंने ट्रैक्टर मेरे पति को गिफ्ट किया, मेरे पति को मैंने ड्राइविंग सिखवाया, और बोले मेरे पति आजकल 8 से 10 गांवों में हैं, ट्रैक्टर से खेत जोतने की मजदूरी करते हैं, और बोले 6 महीने के अंदर ट्रैक्टर की मेरी लोन पूरी भरपाई हो जाएगी, और मैं आज गर्व से कह सकती हूं कि मेरा परिवार लखपति है। शहडोल के पास एक ट्राइबल गांव का ये मिजाज, एक आदिवासी 30-32 साल की बेटी के मन में ये कॉन्फिडेंस, ये मुझे कहता है कि देश 2047 में विकसित होकर के रह सकता है अगर हम सबकी ताकत लग जाए। और ये कोई किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, भले आज कार्यक्रम इस पार्टी के स्थान पर है, लेकिन पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, देश का है, और मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। अब उसमें कैसे, जैसे मान लीजिए आप ही तय करेंगे भाई 10 ऐसे शहर देश में, वो आपके बहुत बड़े बिजनेस हाउसेज बड़े इवेंट करते हैं, इसी मुद्दे पर इवेंट कि बताइए इस शहर की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन कब तक होगी और कैसे हो सकती है, इस शहर की चर्चा करते हैं। इस शहर की 1 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन कैसे हो सकती है, बताइए। आइए सब विद्वान आइए, बैठिए मेरे साथ चर्चा कीजिए। आप बुलाइए अपने स्टूडियो पर, आप उस समिट कीजिए। 10 सिटी, सिर्फ 10 सिटी पकड़िए साहब, वहां आप 2 साल तक ये मोमेंटम लाइए। कोई न कोई बिजनेस हाउस वहां 1-2 समिट कर लें, हर महीने 2 महीने कोई न कोई समिट हो रहा है, और विषय चर्चा में चल रहा है कि भाई इस शहर को मुझे मेरे राज्य का इकोनॉमी का ड्राइविंग इंजन बना देना है। बन जाएगा जी, पक्का बन जाएगा। और इसलिए मुझे जो दूसरी मदद आपसे चाहिए, वो दूसरी मदद मुझे ये चाहिए, और त्योहार में तो कुछ मांग भी सकते हैं जी, और मैं तो ऐसा इंसान हूं जिसको मांगने का पूरा हक है, और इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप कुछ से कुछ योजना बनाइए। 10 शहर अपनी इकोनॉमी को डबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या योजना, और वही ड्राइविंग फोर्स बनने वाला है जी। मुझे पूरी समझ है इन चीजों की, मुझे उस विद्वानों की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं हो सकता है, लेकिन धरती के आंकड़े निकालोगे तो दिखाई दूंगा कहीं पर दोस्तों, ये पक्का दिखाई दूंगा। और इसी विश्वास के साथ मैं आप सबसे दीपावली की, और मैं गुजराती हूं तो हमारे लिए नया वर्ष होता है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी इच्छित सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो, आपके परिवारजन को भी सुख शांति समृद्धि और उससे भी बड़ा संतोष मिले, इसी एक भावना के साथ आप सब आए। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। All right, viewers. So we just heard the Prime Minister speak there. The Prime Minister has been addressing a journalist earlier at the BJP's Diwali Milan program at the party's headquarters in Delhi. And he has brought up multiple issues, especially speaking about the misuse of artificial intelligence for creating deepfakes videos and calling it a big concern. Viewers are getting some breaking updates coming in right now. Getting in visuals from Madhya Pradesh's Indore, where a clash has been reported between the BJP and the Congress workers. The police had to resort to lathicharge to bring the situation under control. Remember, polling is underway in the state. So, viewers, those visuals coming in right now on your screen, where you can see a big scuffle has erupted. Now, we know the scuffle has been reported between the BJP and Congress workers. Those visuals coming in on your screen. And this has happened in Madhya Pradesh's Indore. Police had to resort to lathicharge to bring the situation under control. And polling is right now underway in the state of Madhya Pradesh and Chhattisgarh as well, viewers. So top updates coming in right now. A clash erupting between supporters of the BJP and the Congress party workers in Madhya Pradesh. And we have seen a similar
instance in other areas of Madhya Pradesh today as well. Let's go to Satyavijay joining us on the phone line. Satyavijay, we have seen that one more case of the BJP and Congress workers' clashes coming out in the open. Firing was also reported at a constituency earlier in Madhya Pradesh. Take us through the latest details coming in. जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जो अब तक अपडेट है उसके मुताबिक प्रदेश भर की बात की है तो कई जगह ऐसा घटनाएं देखने को मिल रही है। मुरैना विधानसभा जो हाई प्रोफाइल सीट जहाँ से तोमर प्रत्याशी है वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, हंगामा हुआ। अब से कुछ देर पहले इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो आपस में भिड़े और वहाँ पर भी लाठीचार्ज करना पड़ा। जबलपुर में भी इसी तरह की घटना हुई है जहाँ पर And viewers, so Satyavijay getting us top updates coming in. These visuals are coming in from Madhya Pradesh and Indore, where a clash has been reported between the BJP and the Congress workers. The police had to resort to lathi charge to bring the situation under control. Let's go ahead and see what else is happening across the country. PM Modi extended his greetings to first-time voters in Madhya Pradesh, where a polling is underway for the 230-member assembly. He also urged voters to turn out in large numbers to exercise their right of franchise. On being asked about the CM phase, Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chauhan said, this is not important to me. Our party makes the decision on who has to work where. We don't think about ourselves. Our mission is to work for the development of the country and Madhya Pradesh. है प्रदेश की जनता के लिए आपने लगातार काम किया है, दशकों तक काम किया है, लेकिन अगर कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी तो उसके लिए क्या शिवराज सिंह चौहान तैयार हैं? हम कोई अपने बारे में थोड़ी सोचते हैं। हम इतने निम्न स्तर के कार्यकर्ता नहीं हैं और मैं कहूँगा तो आप अन्यथा मत लीजिए। हमारा सोच ऐसा घटिया नहीं हो सकता कि मैं कहाँ रहूँगा, मेरी जनता कहाँ रहेगी, मेरा देश कहाँ रहेगा, मेरा मध्य प्रदेश कहाँ रहेगा। हम ये सोचते हैं भाई। 3 तारीख की क्या उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। Narendra Chauhan, the brother of Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan, has talked up the prospects of the ruling BJP in the single-phased assembly elections, which is currently underway in the state. He said that he was hopeful of the BJP returning to power in Madhya Pradesh with a comfortable majority. ये शिवराज जी जो का हम कार्यकर्ताओं जो भविष्य है वो तो उज्जवल है और जो निर्णय होगा पार्टी हाईकमान जो तय करेगी वो होगा। और भाजपा आपको लगता है कि इस बार फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, भारी बहुमत से बनाएगी सरकार। Congress state president makes a big charge. He accused the BJP of using money power to bring down the Congress in Madhya Pradesh. He further said the BJP has police, money and administration which is being used by them. मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। वे प्रदेश की तस्वीर जहां हर वर्ग परेशान है देखकर सच्चाई का साथ देंगे। बीजेपी कह रही है 600 के ऊपर रैली की, प्रधानमंत्री ने 15 रैली की, कांग्रेस उसके तुलना में थोड़ी कम पड़ी है। देखिए हमने सबने प्रयास किया, हमने सब अपनी जो हमें करना था हमने किया, जो उन्हें करना था उन्होंने किया। Maoists triggered 2 low-intensity ID blasts in Chhattisgarh a day ahead of the second and final phase of assembly polls in the state. No one was hurt in the blast that took place in the afternoon. Nakul Nath, the Congress leader and son of Madhya Pradesh, Congress chief Kamal Nath was allegedly stopped from entering a polling booth in the Chhindwara by the BJP workers. Much more coming up, viewers. We're live and breaking. Ex-Bharat Pay co-founder Ashneer Grover and wife stopped at Delhi airport. They're facing fake invoices charges. A massive storm over Karnataka minister's communal statement on Speaker's chair. Congress under fire. Stay tuned. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। पहले ही दिन आपके साथ जाने का परम सौभाग्य मिल गया।
हमारे मन में एक विचार चल रहा था। आप एक ही पोजीशन में बैठे बैठे थक जाते होंगे ना जी। ड्राइवर साहब गर्मी और सर्दी में तो परेशान हो जाते होंगे। दिन भर हाथ तकलीफ होती होगी ना। हम कुछ ज्यादा विचार करते हैं क्या? उठो, आगे चलना है। अभी तो आए थे। ट्रक चलेगा तभी तो बिजनेस चलेगा ना। सर जी, अब दिन भर ट्रक चलाते हो फिर भी नहीं थकते हो। हम बैठे बैठे कैसे थक जाते हैं? इस ट्रक की ना एक खासियत है, इसको चलाने वाला नहीं थकता है, बस पर बैठ कर जो मुंह चलाता है ना वो थक जाता है। टाटा ट्रक्स लाए हैं कैबिन कंफर्ट फीचर्स। जब ड्राइवर को मिलेगा कंफर्ट तो ट्रक तो लंबा चलेगा ही। अब ड्राइवर प्रोडक्टिविटी होगी और भी ज्यादा। टाटा ट्रक्स, देश के ट्रक्स। हेलो मोटो। हेलो मोटो। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब लुंगटा स्टील टीएमटी बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। लुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। हेलो मोटो। Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country, only on Republic TV. Welcome back, viewers. You're watching Republic TV. PM Modi, during the second Voice of Global South Summit, which is currently being held in a virtual format, underscored the importance of developing nations and emphasized the strength and similarities they possess that would help in building a better world. Here's the report. पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही है। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर 5 C's के साथ आगे बढ़ें। जब मैं 5 C's की बात करता हूं तब कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। एक्सेलेंसी, पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में मैंने ग्लोबल साउथ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। मुझे खुशी है कि आज दक्षिण डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सेलेंस का उद्घाटन हो रहा है।
Viewers, much more coming up on the other side. Voting underway in Madhya Pradesh for single-phase assembly polls and in Chhattisgarh for the second phase. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है। आधी आबादी की आर्थिक आजादी यानी सबल नारी प्रगति हमारी। बीसी सखी कार्यक्रम से आत्मनिर्भर बन रही है प्रदेश की नारी। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में नियुक्ति, 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ महिलाएं जुड़ी। पोषाहार निर्माण इकाइयों से 4,000 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार। 2,35,000 स्वयं सहायता ग्रुप्स को 2,353 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध। 31,50,000 महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन मिली। सपने हो रहे साकार, डबल इंजन की सरकार। Supreme's over 9,000 and more plumbing and drainage products and water tanks are made from high-quality raw materials and innovative designs. Supreme Total Piping Solutions, with you for a lifetime. Sarah, this is your space. Play it your way. In a journey that defines our dynamic future, Bharat embarks on a mission of shaping a new and determined nation. Witness a journey towards development where turning dreams into reality is not just a possibility, but a certainty. Join us on Bharat 2050, where unwavering commitment and self-reliance meet economically brilliant tomorrow. Very good afternoon. We're live on Bacon Republic TV. We're also live on republicworld.com. Let's take a look at all the top stories making headlines first. Voting underway in Madhya Pradesh for a single-phase assembly polls in Chhattisgarh for second phase. After concerns on social media, Prime Minister Modi raises deepfakes issue, warns over the dangers. Ex-Bharat Pay co-founder Ashneer Grover and wife stopped at Delhi airport, face fake invoices charge. Massive storm over Karnataka ministers, communal statement on Speaker's chair, Congress under fire. Stones pelted at women devotees in Noor district of Haryana, administration on alert, security tightened. It's day 6 of large-scale rescue mission in Uttarkashi. 40 workers still trapped after more than 140 hours. A major controversy has erupted in Karnataka over Minister Zameer Ahmed's campaign speech in Hyderabad. Zameer Ahmed, who is the minority face of Karnataka government, and earlier in Rajasthan, he had admitted that Muslims helped Congress to come to power. He has now said that
Congress has appointed a Muslim speaker and all BJP MLAs are forced to do quote-unquote salam to a Muslim speaker. That is the controversial statement that is coming in from Karnataka's minister yet again. Another controversy hitting the Congress party. Let's take a listen, in fact, to what Karnataka minister had said. के अंदर हम लोग 9 जन एमएलए इलेक्ट हुए, मुसलमान एमएलए 17 सीट दिए थे, 17 के अंदर 9 जन इलेक्ट हुए। 9 जन इलेक्ट होने के बावजूद के अंदर 5 जन को पावर दिया गया है। जमीर अहमद खान को 3 पोर्टफोलियो देके मिनिस्टर बनाया गया है, रहीम खान को मिनिस्टर दिया गया है, सलीम अहमद साहब बैठे तो उनको चीफ व्हिप बनाया गया है। अभी हाल ही के अंदर नसीर अहमद साहब गए, उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया है। आज तक कर्नाटका हिस्ट्री के अंदर कोई मई का लाल स्पीकर नहीं बनाया था। आज स्पीकर बनाने वाले कांग्रेस पार्टी यूटी खादर साहब को आज अच्छे जो बीजेपी के लीडर है ना, आके हमारे यूटी खादर के साथ नमस्कार करके खंडा चाहिए। वो बनाने वाली कौन? कांग्रेस। And hitting out our BJP and JDS who have slammed the Siddaramaiah government. Take a listen into reaction. अन्य ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಸಚಿವರು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಖಂಡನೀಯ. ಅಂತ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಶಾಸಕರುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ No, these kind of ministers or elected representatives come in the public life. What will be the future of the constitution or the level of assembly sessions? After seeing this reaction, if BJP friends, when our assembly starts, already they announced on December 5th, 4th, assembly will going to be commence. On that day, if BJP friends, when speaker enter inside to the podium and if sitting on his chair, if BJP friends decided to stand to show their respect to the chair, not Qadar, respect to the chair. If this thing is happened, what will going to be the house proceedings? Who will going to answer it? Chief Minister, if he had any sense or any commitment to the constitution, he has to take the decision. Going to regarding yesterday's that report, going to the election commission and filing the complaint, it will not going to helpful to anybody. If this decision, any hard decision, if BJP friends take on that day, when assembly start on December 4th, what will be the situation? Who will going to reply for that? In this issue, if he had any sense, if they have any commitment to the constitution, Chief Minister immediately direct him to actually in front of by misusing the speaker name. He is not a Congress worker. He is not belongs to a one community. He is not belong to one community. He is representative. He is the custodian of 224 MLAs as a chairman. This man immediately at least express his excuse. Do you think that this is divisive politics and it will work in the 5 state elections? That will not going to affect on 5 states, but it will going to be a boomerang to the Congress party, even in Karnataka state. But for what extent it will going to be damage in the house proceedings, let us see. So Siddaramaiah has released a few documents as well regarding that CSR funds which you had requested. What is the document, brother? That is CSR fund for 2.5 lakh, 5 lakh. This is the CSR fund.
Which school? I know already one school, I already picturized. Already work is going on in that school. Already small work is going on. After, from last 2 years, when election postponed for local bodies, every year, that Jilla Panchayati and Taluk Panchayati amount, each constituency MLAs, by bringing the notice to the MLAs, officers are repairing work of the schools. Already in all the constituencies, it is going on from last 2 years. This is not the new issue. By showing CSR work, really he again laughing issue in this issue. देखिए, मैं उनका स्टेटमेंट देखा, वो बोले हैं 9 MLA सेलेक्ट हुए मुसलमान में, उसमें 3 जनों को MLA के बावजूद मिनिस्टर बनाए, बाद में विधानसभा में उनको एक आदमी को स्पीकर बनाए। बीजेपी MLAs को हालत ऐसा हो गया, हमारे मुसलमान व्यक्ति स्पीकर बन गया, नमस्कार करना पड़ेगा मुसलमानों को, ऐसा बोले। मैं उनको प्रश्न अब पूछना चाहता हूँ, संविधान एक बार अच्छे से पढ़ना सीखो, इतना दुरहंकार, इतना अहंकार नहीं चाहिए। विधानसभा, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, मिनिस्ट्री, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। वो पोस्ट को, वो स्थान को हम रेस्पेक्ट देंगे, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इसलिए व्यक्ति अच्छा होना और रेस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा। व्यक्ति ठीक नहीं है, फिर भी हम नमस्कार करेंगे, किसको? स्थान को। इसलिए उतना दुरहंकार नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, इमीडिएट इस्तीफ़ा के बारे में मैं नहीं पूछता हूँ, क्षमा मांगना चाहिए, ऐसा मैं डिमांड करता हूँ। My colleague Prajwal Prasad joins us live on the broadcast from Bengaluru. Prajwal, of course, it's not the first time we've seen such words coming out from Zamir Ahmad's mouth. It's not the first time he has spoken about polarization. We've seen what he said in Rajasthan, and now yet again, it's of course a good thing that Karnataka got the first Muslim governor, Muslim speaker, I beg your pardon. But such statements only show the kind of intentions that Karnataka Congress has behind such moves in the garb of secularism. Absolutely, Rakshita, because now if we are looking at it, we have always seen that Zamir Ahmad has courted controversy mainly when it comes to polarization and division of voters as well, because this is not something new that we are seeing only in Hyderabad and Telangana much before the elections. We have also seen it in around 3 to 4 locations, especially in districts which had maximum Muslim population, where the Muslims were dominating as well. And there too, Zamir Ahmad had courted controversy, and recently, just 3 months ago, he had been to Jaipur in Rajasthan, where he had also stated that we were holding closed-door meetings with the ulemas, imams as well, inside mosques and madrasas too, and we know how to go about and do it, and therefore the Muslims have voted en masse to the Congress, and therefore this is the sort of thing that we are going ahead and doing by making the BJP bow before a person who is the speaker, but he's also a Muslim, because he needs to clearly go ahead and understand that the position of a speaker is something which has been there in the Constitution, and the people, that is the legislators who we are speaking about, are elected representatives, and they are also going ahead and respecting that particular post as well. With no offense to UT Khadir has been one of the most impartial speakers, one of the most non-controversial persons as well, and he has this task of taking all the communities together, which he's done exceptionally well, and also taking all the parties together too, and he's made sure that even during the recently concluded session too, he
he made sure that it went around with absolutely no sort of problem as well. But much before the winter session, which is which will be beginning from the 4th of December now, Zamir Ahmad has already gone ahead and quoted a controversy when asked and when we spoke to the BJP, BJP functionaries as well, the BJP State Secretary Ravi Kumar, asking whether they will be boycotting the session. They stated that they will not be boycotting the session because it's the people who have chosen them, and they at the end of the day are accountable to the people of Karnataka and those who have gone ahead and chosen them and elected them to be there in part 2. And all they are demanding is that Zamir Ahmad should come over and apologize too. And even if he does not apologize, it's all right with the BJP too. So they have basically toned down. But somewhere on the other side, the JDS is now going ahead and demanding either the resignation of Zamir Ahmad, which is unlikely to happen, or else the sacking of Zamir Ahmad by Chief Minister. And also, Zamir Ahmad is Chief Minister Siddaramaia's favorite poster boy when it comes to the minorities too. So all said and done, today the Chief Minister has not spoken about this entire incident. 2 times or 3 times when the media tried to go ahead and speak to him, he just dismissed this particular incident as well, and he chose not to comment on this. So any action we are expecting the Chief Minister to take on Zamir Ahmad will not happen. But then the BJP is quite confident that this divisive politics and the polarization politics will not work in the upcoming 5 state elections, and the people of Telangana will teach Zamir Ahmad and the Congress a befitting lesson. Absolutely, of course. Congress's silence is only complicit in matter and many other such matters. Thank you so much for the moment for joining us on the broadcast, Pajwal. That is the latest we have. Viewers, JDS and BJP launching a scathing attack against Congress for drawing religious link to the post of a speaker in Karnataka. Shifting focus to other news now. The rescue operation to evacuate 40 construction workers trapped 260 meters inside the Silgara Bar Court under construction tunnel in Uttarkashi has entered its 6th day now. A powerful new drilling machine was pressed into service to aid in the rescue efforts. The new machine is slowly making progress as concerns grow over the health of the workers who have been trapped for more than 100 hours. Here's a report. उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में अभी भी 40 मजदूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। आज 6ठा दिन है और बीते 5 दिनों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि जो मलबा है वो 40 से 50 मीटर तक उसकी जो लंबाई जो है मलबे की वो है, और उस मलबे के अंदर से पाइप्स लगा करके और एक टनल नुमा रास्ता बनाकर सभी मजदूरों को निकाला जाएगा। ताज़ी अपडेट्स जो हैं 22 मीटर तक ड्रिल हो चुका है। अमेरिकन ऑगर नाम की मशीन ड्रिल कर रही है और 22 मीटर यानी कि 4 पाइप्स जो हैं उनको वेल्डिंग करके ड्रिल कर दिया गया है, लगा दिया गया है, और 5वें पाइप की वेल्डिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू है। आपको बता दें, देखिए तस्वीरें देखिए, ये टनल का मुख्य द्वार है और यहाँ पर जो है अंदर अमेरिकन ऑगर नाम की मशीन जो है उसके द्वारा ड्रिल किया जा रहा है, और तमाम जो अधिकारी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार जो है पिछले 5 दिनों से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें, कुल जो है वो 12 से लेकर के 14 पाइप्स लगने हैं और 50 से 70 मीटर तक ये जो पाइप्स के द्वारा रास्ता बनाया जाएगा, और उन पाइप्स के माध्यम से सभी जो अंदर 40 मजदूर हैं उनको निकाला जाएगा। In other news, Prime Minister Modi raised concerns over the rising number of deepfake videos as he urged the media to educate more about artificial intelligence. The comments come while he addressed the Diwali Milan Sammelan program. डीपफेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है। जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है। In a big win for security forces, one terrorist has been neutralized and huge cache of arms and ammunition have been recovered in the joint operation in Budal of Rajouri district. Meanwhile, such operations are currently underway. In a latest development, NIA has attached properties of drug peddlers and overground workers in Dharoti village of Mendhar in Jammu and Kashmir's Poonch district.
The death toll in multiple blasts at a convention center in Kalamasrai touched 6 after one more person who was undergoing treatment died at a hospital today. Notably, over 50 people were injured. Some were seriously injured in the multiple blasts at the International Convention Center. Time for a short break, viewers. On the other side, ex-Bharat Pay co-founder Ashneer Grover and wife stopped at Delhi airport face fake invoices charge. And stones pelted at women devotees in Noor district of Haryana. Administration on alert, security tightened. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना। कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ड्रीम लैमिनेट्स, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। So these are strange things. I usually say that these things come to me, I don't choose them. Running the half marathon, I did that maybe 5 years ago, 6 years ago in Bombay. Speaking French in front of 5,000 French people in Bordeaux. So I had to go through a 1-year training program, learn how to speak French and then go and do this whole thing. This year was climbing Mount Fuji in Japan. Last year was learning how to play the guitar. 1 year was dancing on stage. So I went for these hip hop, jazz classes for a while and did that. So I feel like I love that, I love challenging myself, because at the end of the day, it's your mind that you have to conquer, and once you conquer that, you can do anything. Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. तेरे ही दम से मेरा जग उजियारा, the taste of India. दिन हो या रात तूने दिल को पिघलाया, the taste of India. तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तुझसे है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल the taste of India. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you latest news updates from across the country only on Republic TV. पतंगे रस्सी दूसरे खाली हो रहा हूँ ना, इसके साथ बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए एक चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा, पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया, कि यहाँ का व्यापारिक नाम लिया था, नहीं लगे। Welcome back. Working overnight with a powerful machine, rescue workers had by Friday drilled up to 24 meters through the rubble in Silkyara tunnel, inching closer to the 40 labourers trapped there for 5 days. Here's a report by my colleague Vishal Pandey.
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में अभी भी 40 मजदूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। आज छठा दिन है और बीते 5 दिनों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि जो मलबा है वो 40 से 50 मीटर तक उसकी जो लंबाई जो है मलबे की वो है, और उस मलबे के अंदर से पाइप्स लगा करके और एक टनल नुमा रास्ता बनाकर सभी मजदूरों को निकाला जाएगा। ताज़ी अपडेट्स जो हैं 22 मीटर तक ड्रिल हो चुका है। अमेरिकन ऑगर नाम की मशीन ड्रिल कर रही है और 22 मीटर यानी कि 4 पाइप्स जो हैं उनको वेल्डिंग करके ड्रिल कर दिया गया है, लगा दिया गया है, और 5वें पाइप की वेल्डिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू है। आपको बता दें, देखिए तस्वीरें देखिए, ये टनल का मुख्य द्वार है और यहाँ पर जो है अंदर अमेरिकन ऑगर नाम की मशीन जो है उसके द्वारा ड्रिल किया जा रहा है, और तमाम जो अधिकारी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार जो है पिछले 5 दिनों से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें, कुल जो है वो 12 से लेकर के 14 पाइप्स लगने हैं और 50 से 70 मीटर तक ये जो पाइप्स के द्वारा रास्ता बनाया जाएगा, और उन पाइप्स के माध्यम से सभी जो अंदर 40 मजदूर हैं उनको निकाला जाएगा। सूत्रों की मानिए तो जब सभी मजदूरों को निकाला जाएगा तो सबसे पहले मेडिकल चेकअप यहीं पर होगा। एम्बुलेंसेज जो हैं और डॉक्टर्स की टीम वो स्टैंड बाई पर है, और जब मेडिकल चेकअप होगा तो उसके हिसाब से किसकी क्या शारीरिक स्थिति है, उसके हिसाब से उसको यहाँ के नज़दीकी अस्पताल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, या फिर ज़्यादा अगर ज़रूरी पड़ा तो एयरलिफ्ट के माध्यम से उसको जो है एम्स जो है वो रेफ़र किया जाएगा। सभी जो है स्टैंड बाई पर हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार जो है मॉक ड्रिल कर रही हैं। यहाँ पर एसडीआरएफ द्वारा भी मॉक ड्रिल किया जा रहा है। लोकल पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर बैरिकेड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आईटीबीपी के जवान हैं, लोकल पुलिस प्रशासन है, और तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। माना ये जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटे जो हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, जो ड्रिलिंग का काम है वो चल रहा है, और आज शाम या देर रात तक ये ड्रिलिंग अगर पूरी हो जाती है उसके बाद सभी 40 मजदूरों को अंदर से बाहर निकाल लिया जाएगा। And for a short break on the other side, voting is underway in Madhya Pradesh for a single phase assembly polls and in Chhattisgarh for the second phase. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। फर्स्ट टाइम दाल? या नो पिन। छोटी सी पेमेंट्स के लिए पिन नहीं लगता, मेरा छोटा सा नुस्खा। लेकिन दाल तड़का के लिए दाल लगती है, मेरा छोटा सा नुस्खा। No PIN for small payments on PhonePe UPI Lite. उत्तर प्रदेश को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हर संभव कार्य कर रही योगी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर देश तथा विदेश के 66 बड़े निवेशकों ने बीते 4 वर्षों में टेक्सटाइल और गारमेंट के सेक्टर में 8,700 करोड़ रुपए का निवेश करने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपे हैं। उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल और गारमेंट्स की अपनी जो पॉलिसी है वह आप सबके सामने है। आपने उसको देखा होगा। एक बेहतरीन पॉलिसी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने मानवीय हस्तक्षेप को जीरो करते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश को भारत का टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक और पहल करते हुए नोएडा में अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर की स्थापना के लिए 150 एकड़ भूमि आवंटित भी कर दी है। Supreme's over 9,000 and more plumbing and drainage products and water tanks are made from high-quality raw materials and innovative designs. Supreme Total Piping Solutions, with you for a lifetime. With 49 studios, Woodfill has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. Dozens of rockets launched by Hamas in Israel village hardly
100 meters away from Gaza. Another rocket attack from Hamas foiled by Iron Dome systems in Netiv Hasara, that is in southern Israel. Gursimran Singh, my colleague, gets us this exclusive report as the war rages on. An alert has been sounded as multiple rockets have landed inside the kibbutz. It's very close to the border, and you will see that how these air dome system has become active. This is Netiv Hasara, where the attempt was made by the side of Hamas to carry out attack, and now the Iron Dome system has been activated, and this is now destroying the rockets that are being launched, and multiple rockets are being launched by the Hamas. A barrage of rockets have been launched from the side of Hamas that have now been destroyed by the Air Dome system, and you will see those rockets that have been launched from the Israel side to decimate the attempts of the terrorists of Hamas. Step into a short break. On the other side, ex-Bharat Pay co-founder Ashneer Grover and wife stopped at Delhi airport face fake invoices charge. And stones pelted at women devotees in Noor district of Haryana. Administration on alert. Security has been tightened. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना। कभी जीती तू, कभी मैं हारा। फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है घुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। Her name is Anita ji. She was from a little village, a little far away from UP. She was pregnant for the 6th time, and the husband, in a drunken state, slit open her stomach to check the gender of the baby. Turns out it was a boy, but didn't survive. And now she was in the hospital. We reached out. We told her story, and we raised 25 lakhs for her and her daughters. Her brother called our head of content, Kirti Shri, and said, आपके टीम का फोटो चाहिए क्योंकि आप हमारे लिए आप ही भगवान हैं। Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India this weekend only on Republic TV. नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी। माँ का बार-बार फोन अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया है तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ। उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब रुंगटा स्टील टीएमटी बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। रुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। Powered by बढ़िया है शुद्ध है MDH मिर्ची धनिया हल्दी असली मसाले सच सच MDH Co-powered by Motorola, India's best 5G smartphone brand. Amazing spaces के लिए Green Lam Laminates, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country only on Republic TV.
Good evening and welcome, friends. This 5 p.m. live and breaking. Prime Minister has started what could be a deep debate on deepfake while addressing media persons at the BJP headquarters, part of the Diwali Milan event. And of course, Madhya Pradesh and Chhattisgarh have voted today for the respective state assemblies. We'll cover all that and more. Let's begin with the headlines first. Voting underway in Madhya Pradesh for single-phase assembly polls and in Chhattisgarh for the second phase. After concerns on social media, Prime Minister Modi raises deepfakes issue, warns over the dangers. Ex-Bharat Pay co-founder Ashneer Grover and wife stopped at Delhi airport face fake invoices charge. Massive storm over Karnataka minister's communal statement on Speaker's chair. Congress under fire. Stones pelted at women devotees in Nuh district of Haryana. Administration on alert, security tightened. It is day 6 of large-scale rescue mission in Uttarkashi. 40 workers still trapped with more than 140 hours. Well, welcome back, friends. In a big statement, Prime Minister Modi has now said that the use of artificial intelligence for creating deepfake is problematic and hence further urged media to educate people. He gave his own example of how he never did or participated in Garba after school days, and yet we recently had a video which showed Prime Minister doing that Garba. Let's listen to what exactly the Prime Minister said and what he meant. अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है। अब आपको तो डिस्टेंस समय मैटर ही नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है, और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया। लेकिन एक चिंता का विषय है जी, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम जैसी सोसाइटी जो विविधताओं से भरी है, जब पहले मूवी आते थे एक आध कहावत उस मूवी में आ जाए, आती थी चली जाती रही। आज एक आध कहावत आ जाए तो पूरी मूवी चलना बंद हो जाए, मुश्किल हो जाता है कि तुमने उस समाज का अपमान किया, वो किया, ढिकना किया। वो उसने अरबों खरबों करोड़ों रुपया कुछ भी खर्च किया, वो कोई पूछने वाला नहीं है, तुम जवाब दो तुमने क्या किया। ये हाल है। ऐसे में आप इस शास्त्र को तो समझाने से तो कोई लाभ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं उदाहरणों के साथ, तो कोई भी, वैसे मुझे जब इस विषय को आगे बढ़ाने व्यक्ति चैट जीपीटी के लोग मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि जैसे सिगरेट पे आता है, इट्स कैंसरस, पीना 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 तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिखा हुआ रहता है ये हेल्थ के लिए हैजार्ड है, ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने कहा तुम्हारा जो भी चैट जीपीटी का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से एआई का उपयोग करता है, तो वहां एक आना चाहिए, इट्स अ डीप फेक। फिर उसको देखें, आनंद करे, जो करना है करे, लेकिन उस पर आना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा साहब मुझे भी बड़ी चिंता है कि ये मैंने कर तो दिया,
लेकिन कैसे रुकेगा, तो एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी मेरी एक अपेक्षा है जिसको मैं समझता हूं कि आप जरूर मदद कर सकते हैं। किसी भी समाज में, व्यक्ति में, राष्ट्र जीवन में कुछ पल आते हैं, कुछ कालखंड आता है जो हमें बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाने के लिए एक जंप दे देता है। आज मैं जो वैश्विक परिस्थितियां देख रहा हूं, जिस जगह पे मैं हूं, तो मुझे कुछ ज्यादा गहराई में देखने का अवसर मिलता है। मैं समझता हूं शायद ऐसा काल हम लोगों के सामने हम देख पा रहे हैं। हमारा ये कालखंड उस भव्यता की तरफ जाने वाला कालखंड से जुड़ा हुआ है। दो चीजें मुझे लगती हैं। एक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। और बाय एंड लार्ज आजादी की लड़ाई से लेकर के भारत में जिस भी चीजें से मीडिया शब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, गेरुए कपड़े हैं तो हमारे यहां एक स्वाभाविक उसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको। वैसा मीडिया को भी है, एक विरासत का लाभ उसको मिलता है। और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है, यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है समाज जीवन की व्यवस्थाओं को। और ये बहुत मुश्किल काम होता है जी, बहुत मुश्किल काम होता है। मान लीजिए कहीं कोई एक गलत चीज ने कुछ नई समस्या पैदा कर दी, अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है। अब आपको तो डिस्टेंस, समय मैटर ही नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है। और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया। लेकिन एक चिंता का विषय है जी, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम जैसी सोसाइटी जो विविधताओं से भरी है, जब पहले मूवी आते थे एक आध कहावत उस मूवी में आ जाए, आती थी चली जाती रही। आज एक आध कहावत आ जाए तो पूरी मूवी चलना बंद हो जाए, मुश्किल हो जाता है कि तुमने उस समाज का अपमान किया, वो किया, ढिकना किया। वो उसने अरबों खरबों करोड़ों रुपया कुछ भी खर्च किया, वो कोई पूछने वाला नहीं है। तुम जवाब दो तुमने क्या किया, ये हाल है। ऐसे में आप इस शास्त्र को तो समझाने से तो कोई लाभ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं उदाहरणों के साथ, तो कोई भी, वैसे मुझे जब इस विषय को आगे बढ़ाने व्यक्ति चैट जीपीटी के लोग मिले थे तो मैंने उनको कहा था, All right, I'm told we're joined in by Piyush Ohri live. He covers Delhi crime beat, and it's topical that Prime Minister has brought under focus an issue which otherwise also has been
under the lens of agencies for a while. Piyush Ohri, we saw that Rashmika Mandana issue. Prime Minister mentioned about his own deepfake video. You talked to your officers there on the beat. Are you getting a sense that police is aware of the scale of the problem that we are facing, and are they technologically equipped to take care of this? So yes, Abhishek, what I can just tell you is that it is a big challenge, and this is a challenge that has been acknowledged by the law enforcement officials. And I'm very glad that you just mentioned the case of this famous Bollywood actress, the case of... Arey yaar. All right, seems to be some issue there with the audio of Piyush Ohri and Prime Minister there engendering a debate on deepfakes in the backdrop of his own video that came a few days back, where the Prime Minister is seen performing Garba, and which he has he mentioned that he never participated in a Garba after his school days, and yet somebody created that deepfake video of him, which was so close in resemblance. And of course, we have seen a debate panning out post the Rashmika Mandana issue on deepfakes with a video that came out where Rashmika Mandana was seen while she had not, she was not there in that video. All right, on that note, we'll come back and discuss some very detailed aspects of this issue of deepfake when we come back for a debate later in the evening. But as of now, moving on, there has been a powerful earthquake in Southeast Asia, with epicenter perhaps in the Philippines. 6.7 magnitude earthquake has shook the southern Philippines. There were no immediate reports of serious damage or injuries, and no tsunami warning has been issued. So the quake measured 6.7 on the Richter and was located 26 kilometers or 16 miles from Burias at the southern tip of the Philippines. The U.S. Geological Survey said. It is said that there was a low likelihood of casualties and damage, and the Philippine Institute of Volcanology and Seismology measured the earthquake magnitude at 7.2 and said it was only 10 kilometers or 6 miles deep. Shallow earthquakes are more likely to cause damage on the Earth's surface. Philippines experiences regular earthquakes and volcanic eruptions as much of the Southeast Asia does, and these are eruptions due to its location on the Pacific Ring of Fire and arc of seismic faults around the ocean. And we are seeing in these pictures some damage because of the trembler, and people can be seen rushing out of the buildings. And we will update you viewers on whether there has been any widespread damage because of the earthquake. That note, we move on to the next story, which is from down south in Karnataka. A major controversy has now erupted in the state over Minister Zamir Ahmed's campaign speech in Hyderabad. Okay, so minister is from Karnataka, but the speech was in Hyderabad. Minister Zamir Ahmed, a minority face of the Karnataka government, who earlier in Rajasthan admitted Muslims helped Congress come to power, has now said that we have appointed a Muslim speaker and all BJP MLAs are forced to do salam to a Muslim speaker, communalizing the chair of the speaker. Let's listen into what exactly Zamir Ahmed has said. अंदर हम लोग 9 जन एमएलए इलेक्ट हुए, मुसलमान एमएलए 17 सीट दिए थे, 17 के अंदर 9 जन इलेक्ट हुए। 9 जन इलेक्ट होने के बावजूद के अंदर
5 जन को पावर दिया गया है। जमीर अहमद खान को 3 पोर्टफोलियो देके मिनिस्टर बनाया गया है, रहीम खान को मिनिस्टर दिया गया है, सलीम अहमद साहब बैठे तो उनको चीफ व्हिप बनाया गया है। अभी हाल ही के अंदर नसीर अहमद साहब गए, उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया है। आज तक कर्नाटका हिस्ट्री के अंदर कोई माइका लाल स्पीकर नहीं बनाया था। आज स्पीकर बनाने वाले कांग्रेस पार्टी यूटी खादर साहब को आज अच्छे जो बीजेपी के लीडर है ना, आके हमारे यूटी खादर के साथ नमस्कार करके खड़ना चाहिए। वो बनाने वाली कौन? कांग्रेस। Slammed the Siddharamaia government for that. Let's listen to Kumaraswamy first. H.D. Kumaraswamy. No, these kind of ministers or elected representatives come in the public life. What will be the future of the constitution or the level of assembly sessions? After seeing this reaction, if BJP friends, when our assembly starts, already they announced on December 5th, 4th, assembly will going to be commenced. On that day, if BJP friends, when speaker enter inside to the podium and if sitting on his chair, if BJP friends decided to stand to show their respect to the chair, not Qadar, respect to the chair. If this thing is happened, what will going to be the House proceedings? Who will going to answer it? Chief Minister, if he had any sense or any commitment to the Constitution, he has to take the decision. Going to, regarding yesterday's that report, going to the Election Commission and filing the complaint, it will not going to helpful to anybody. If this decision, any hard decision, if BJP friends take on that day, when assembly start on December 4th, what will be the situation? Who will going to reply for that? In this issue, if he had any sense, if they have any commitment to the Constitution, Chief Minister immediately direct him to actually in front of by misusing the speaker name. He is not a Congress worker. He is not belongs to one community. He is not belong to one community. He is is the custodian of 224 MLAs as a chairman. This man immediately at least express his excuse. Do you think that this is divisive politics and it will work in the 5 state elections? That will not going to affect on 5 states, but it will going to be a boomerang to the Congress party, even in Karnataka state. But for what extent it will going to be damage in the House proceedings, let us see. So Siddharamaia has released a few documents as well regarding that CSR funds which you had requested. What is the document, brother? That is CSR fund for 2.5 lakh, 5 lakh. This is the CSR fund. Which school? I know already one school I already picturized. Already work is going on in that school. Already small work is going on. After, from last 2 years, when election postponed for local bodies, every year, that Jilla Panchayati and Taluk Panchayati amount, each constituency MLAs, by bringing the notice to the MLAs, officers are repairing work of the schools. Already in all the constituencies, it is going on from last 2 years. This is not the new issue. By showing CSR work, actually he again laughing issue in this issue. See, I never thought that Zamir Ahmad is so stupid.
and illiterate behavior. Actually, speaker post is not a ism or caste sitting there. Constitution is sitting there in that place. Every person, MLA, MLC, whoever, elected members, have to bow their head to Constitution. In the post, whoever is sitting, I am Muslim, a Dalit, if Muslim sitting is a Muslim speaker, we call him as a Muslim speaker, Dalit speaker, Hindu speaker, Muslim speaker, no. It is speaker is a speaker. We have to give a respect to that position, not to the person. This Zamir Ahmad is unfit to become a minister. He doesn't know what is democracy, what is constitution and all. I demand his resignation. If not, chief minister immediately should sack him from the minister seat. Not that we are going to oppose this this issue. Congress themselves should oppose this and his behavior. That is what I can say. There's absolutely been no sort of response from the Congress party. They have remained silent. We see that the Chief Minister has gone to Mysuru. The Deputy Chief Minister again chooses not to reply to this. So do you think that a few of the Congress leaders on this particular issue are acting according to their convenience? Yeah, of course. They are appeasing these Muslims. And how long they are going to please like this for the sake of vote bank? This is a totally irresponsible government, irresponsible chief minister and Congress leaders. All right, I'm joined in by Prajwal from Bengaluru on this story. Prajwal, reactions are of course coming in and the BJP would obviously target the Congress, but what is important is that it's a problematic statement that the Karnataka minister has made. What's the view of the Congress, of the government there, of the chief minister, of the party president? Are they even bothered about it? Are they taking note of it? Forget about taking action. Are they even taking note of this? Abhishek, now when we are looking at the sort of response that had to come in from the Chief Minister, he's dismissed this entire incident in itself, and he's not even ready to react to it, or neither is he ready to listen to it. And meanwhile, the Deputy Chief Minister has not commented on this, and he's just swept this under the carpet or under the doormat to be in particular, because he stated that no matter what, he will not be replying on this particular incident, and it is left to the Chief Minister to go ahead and have a word with Zamir Ahmad. And meanwhile, Zamir Ahmad Khan has always been Chief Minister Siddaramaya's favorite poster boy, and therefore, even in the past, he's made such statements. Even in the 2023 Assembly elections, which we saw, which recently concluded in the state of Karnataka, there has been several such controversial comments which has come in from him now and again. But seems like there has been no sort of action that has been taken as well, because some of the leaders from the Congress party in itself, mainly hailing from the Hindu community, had gone ahead and complained with the High Command of the Congress. But seems like even the AICC has turned a blind eye and have just given him a free rein to go ahead and polarize the voters too, because just a few months ago we saw that Zamir Ahmad had also gone ahead and made a very controversial statement saying that the Muslims had voted en masse to the Congress party, but this plan was divided inside madrasas, inside mosques, when the Congress started working with the ulemas and the imams as well, and this has definitely not gone down well even with their own party leaders too. And even though Speaker UT Qadir has not spoken about this, sources within the know of this development has stated that UT Qadir was furious with Zamir Ahmad Khan for making such a statement, and he's also gone ahead and said that he should not have disrespected the post or the position of the speaker, and this is absolutely an unconstitutional statement made by him. So before everything breaks out, when the BJP was questioned whether they would go ahead and attend the session or whether they would boycott it, they stated that they absolutely had no sort of disrespect either towards the speaker or else even towards UT Qadir as well, because they respect the post and the position, and he is also an uncontroversial person. So they're saying that only Zamir Ahmad is trying to go ahead and politicize this entire incident, and therefore they have asked him to go ahead and tender his resignation or else at least an apology to the BJP party.
All right, thank you so much. We have not heard the last of this. We'll continue to come back to the story, and possibly 5 Lashkar-e-Taiba terrorists have been gunned down in the firefight with security forces in the Kulgam district of Jammu and Kashmir. This was second infiltration bid in the same region. Here's a report filed by Zishan Fazil. Reporting from Samano Kulgam encounter spot, and this is the very residential house that was used by the terrorists. This was a kind of hideout which the forces believe, and they have received an input about the presence of terrorists in this very house. This was a second 2-story house that was used by the terrorists. In fact, in this entire 18-long operation, we not only witnessed that the 5 terrorists of the Lashkar-e-Taiba neutralized, their dead bodies recovered, but also the arms and ammunition that were recovered from this very spot. Now we are seeing the locals reaching to the spot, and many of the women are wailing and crying, and some damage has also been done to the house adjacent to this very spot where some window panes have been damaged. We are seeing that the security cordon in the entire India continues. Withdrawal of forces at many places have taken place. Arms and ammunitions have been recovered, and also the dead bodies of the local terrorists, 5 in number, have been retrieved, and they have been shifted to another location. With VJ Mubashir Hussain, I'm Zishan Fazil for Republic in Kulgam. All right, a short break. On the other side, ex-Bharat Pay co-founder Ashneer Grover and wife stopped at Delhi airport, face fake invoices charge. Also, stones pelted at women devotees in New district of Haryana. Administration on alert, security tightened. Be right back. Parliament of the Hamas political bureau has been captured by the Israel Defense Forces. This comes on the 30th day of the war. Recovery of the arms and ammunition from the basement of Rantisi Hospital, which is the hospital of the children in the Gaza Strip, and that was occupied by the terrorists of Hamas, the underground tunnel system, the basement being used by the terrorists of Hamas, possibly to keep the hostages, as being said by the Israel Defense Forces. This speaks of the volumes that how the schools, the mosques, the kindergartens, and also the hospitals are being used as their bases, the hideouts by the terrorists of Hamas, and now many of them has been busted. पीछे गाजा बॉर्डर भी देख पा रहे हैं, जहां पर लगातार हमले तेज हो रहे हैं। आईडीएफ की तरफ से वीडियो जारी कर बताया गया है कि गाजा पट्टी में कैसे एक्शन में नजर आ रही है 400वीं ब्रिगेड, उसकी तस्वीर अब सामने आई है। आईडीएफ का ऑपरेशन लगातार एडवांस स्टेज में आता हुआ नजर आ रहा है। चुनौतियां जहां गाजा सिटी से आगे बढ़ने की थी, अब वो चुनौतियां दोबारा वहीं सरहदी इलाकों पर आ गई हैं, क्योंकि हमास काफी ज्यादा चुनौती दे रहा है। हमास अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये बात जो है इजराइल भी जानता है, और यही कारण है कि बार बार उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ये कह रही है कि ये जंग लंबे समय तक चलेगी। कांग्रेस वो पार्टी है जो निवेशकों को भगाती है। क्या डर है आपको, और किससे डरे हुए हैं जो आप कास्ट सेंसस नहीं करा रहे हैं? आज 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। किसानों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कांग्रेस ने कभी किया था क्या? राहुल गांधी को जो है ना पॉलिटिकल एमनीजिया की बीमारी है। एक कांग्रेस पार्टी ना देश का विकास कर सकती है, ना मध्य प्रदेश का विकास। ये तोप के गोले हैं, जरा इनकी साइज देखिए, और इन्हीं तोप के गोलों से हिजबुल्लाह के आतंकियों का इलाज किया जा रहा है। ये वो टैंक है जिसकी रेंज करीब 35 किलोमीटर है। ये मतो टैंक कहा जाता है, और जिस तरफ आप बैरल का मुंह देख रहे हैं, उस तरफ हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं। हम इस वक्त जिस इलाके में हैं, यहाँ पर एक्टिव वॉर जोन है। यहाँ करीब 500 की तादाद में आर्टिलरी मैन तैनात किए गए हैं। ये मतो टैंक है जो हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को चुन चुन कर उनका सफाया कर रहा है।
Good evening. We are live and breaking on Republic TV. I'm Raksha Mishra with you this evening. Let's start with all the top stories that are making headlines at this hour. Voting underway in Madhya Pradesh for the single phase assembly polls and in Chhattisgarh for the second phase. After concerns on social media, Prime Minister Modi raises deepfake issue, warns over the dangers. Ex-Bharat Pay co-founder Ashneer Grover and wife stopped at Delhi airport, faces fake invoices charge. Massive storm over Karnataka minister's communal statement on Speaker's chair. Congress under fire. Stones pelted at women devotees in Noor district of Haryana. Administration on alert. Security tightened. It's day 6 of large-scale rescue mission in Uttarkashi. 40 workers still trapped after more than 140 hours. Working overnight with a powerful machine, rescue workers had by Friday drilled up to 24 meters through the rubble in Silkyara tunnel in Uttarkashi, inching closer to the 40 laborers who have been trapped there for 5 days. Here are some ground reports on Republic TV. के सिलक्यारा टनल में अभी भी 40 मजदूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। आज छठा दिन है और बीते 5 दिनों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि जो मलबा है वो 40 से 50 मीटर तक उसकी जो लंबाई जो है मलबे की वो है और उस मलबे के अंदर से पाइप्स लगा करके और एक टनल नुमा रास्ता बनाकर सभी मजदूरों को निकाला जाएगा। ताज़ी अपडेट्स जो हैं 22 मीटर तक ड्रिल हो चुका है। अमेरिकन ऑगर नाम की मशीन ड्रिल कर रही है और 22 मीटर यानी कि 4 पाइप्स जो हैं उनको वेल्डिंग करके ड्रिल कर दिया गया है, लगा दिया गया है और 5वें पाइप की वेल्डिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू है। आपको बता दें, देखिए तस्वीरें देखिए, ये टनल का मुख्य द्वार है और यहाँ पर जो है अंदर अमेरिकन ऑगर नाम की मशीन जो है उसके द्वारा ड्रिल किया जा रहा है और तमाम जो अधिकारी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार जो है पिछले 5 दिनों से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कुल जो है वो 12 से लेकर के 14 पाइप्स लगने हैं और 50 से 70 मीटर तक ये जो पाइप्स के द्वारा रास्ता बनाया जाएगा और उन पाइप्स के माध्यम से सभी जो अंदर 40 मजदूर हैं उनको निकाला जाएगा। सूत्रों की मानिए तो जब सभी मजदूरों को निकाला जाएगा तो सबसे पहले मेडिकल चेकअप यहीं पर होगा। एम्बुलेंसेज जो हैं और डॉक्टर्स की टीम वो स्टैंड बाई पर है और जब मेडिकल चेकअप होगा तो उसके हिसाब से किसकी क्या शारीरिक स्थिति है उसके हिसाब से उसको यहाँ के नज़दीकी अस्पताल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर ज़्यादा अगर ज़रूरी पड़ा तो एयरलिफ्ट के माध्यम से उसको जो है एम्स जो है वो रेफ़र किया जाएगा। सभी जो है स्टैंड बाई पर हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार जो है मॉक ड्रिल कर रही हैं। यहाँ पर एसडीआरएफ द्वारा भी मॉक ड्रिल किया जा रहा है। लोकल पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर बैरिकेड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आईटीबीपी के जवान हैं, लोकल पुलिस प्रशासन है और तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। माना ये जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटे जो हैं बेहद महत्वपूर्ण है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जो ड्रिलिंग का काम है वो चल रहा है और आज शाम या देर रात तक ये ड्रिलिंग अगर पूरी हो जाती है उसके बाद सभी 40 मजदूरों को अंदर से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट यही है कि 4 पाइप्स जो थे उनको हमने इंसर्ट करवा दिया गया है और 5th पाइप की वेल्डिंग चालू है और इसकी ऑपरेशन फुल स्विंग में है। जितनी भी एजेंसीज हैं वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार चल रहा है और वो भी पल पल अपडेट ले रहे हैं इसकी और प्रॉपर संवाद बनाए हुए हैं। हम लोग जो उनके परिजन हैं अंदर फंसे हुए मजदूरों के, उनसे भी हम बात कर रहे हैं और उनको यही सलाह दे रहे हैं संयम और विश्वास रखने की और वो भी कॉन्फिडेंट हैं और टेक्निकल टीम्स जो हैं लगी हुई हैं और हम लोग मॉक ड्रिल भी करा रहे हैं एनडीआरएफ। किस तरीके की चुनौतियां जो हैं वो सामने आ रही हैं क्योंकि मलबा है और मलबे के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ठोस पत्थर स्टील भी सामने आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल हो सकता है अंदर की रॉक बोल्ट्स हों और कोई बीमर हो, कोई मशीन भी हो सकती है। तो अभी तक तो कोई बहुत मेजर ऑब्स्टेकल नहीं आया है बट जो भी आएगा उसमें भी उसके लिए भी हमने स्पेयर्स और जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं वो सब प्लेस किए गए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू को ख़त्म कर लिया जाएगा।
Dozens of rockets have been launched by Hamas in Israel village, hardly 100 meters from Gaza. Meanwhile, another rocket attack from Hamas was foiled by Iron Dome systems in native Hasara, that is in southern Israel. Gursimran Singh gets this exclusive report. Take a look. An alert has been sounded as multiple rockets have landed inside the kibbutz. It's very close to the border, and you will see that how these air dome system has become active. This is native Hasara, where the attempt was made by the side of Hamas to carry out attack, and now the Iron Dome system has been activated, and this is now destroying the rockets that are being launched, and multiple rockets are being launched by the Hamas. A barrage of rockets have been launched from the side of Hamas that have now been destroyed by the air dome system, and you will see those rockets that have been launched from the Israel side to decimate the attempts of the terrorists of Hamas. In other news now, a big win for security forces. One terrorist has been utilized. Huge cache of arms and ammunition have also been recovered in the joint operation in Budhal of Rajouri district. Meanwhile, search operations are currently underway. In a latest development, NIA has attached properties of drug peddlers and overground workers in Daroti village of Mendar in Jammu and Kashmir's Poonch district. The death toll in multiple blasts at a convention centre in Kalmastri touched 6 after one more person who was undergoing treatment died at a hospital today. Notably, over 50 people were injured in the multiple blasts at the International Convention Centre. At least 5 people have died in an accident that took place last night at Randeja Petapur Highway in Gandhinagar. According to reports, a car rammed into a tree in Gujarat's Gandhinagar, which led to the tragic incident. And amid deteriorating air quality, stubble burning remains continued in several parts of Punjab. Meanwhile, reports suggest Punjab police have registered 678 FIRs from the 7th of November till Thursday against farmers setting paddy stubble on fire in violation of Supreme Court directions, in spite of repeated requests by the state government to not cause air pollution. As air quality index in the national capital remains in the severe category for 5th straight day post-Diwali, Delhi Environment Minister Gopal Rai has taken stock of the situation as he visited the construction sites to review measures taken to control air pollution. In an untoward incident, a senior police officer was found dead in Punjab's Amritsar on Friday morning. As per reports, Sarup Singh was going to clock in for his shift when bike-borne attackers shot and killed him. An FIR has been registered and an investigation is underway in the incident. Time for a short break, viewers. On the other side, the massive storm over Karnataka minister's communal statement on Speaker's chair. Congress is under fire. And stones pelted at women devotees in Nuh district of Haryana. Administration on alert, security tightened. पीछे गाजा बॉर्डर भी देख पा रहे हैं, जहां पर लगातार हमले तेज हो रहे हैं। आईडीएफ की तरफ से वीडियो जारी कर बताया गया है कि गाजा पट्टी में कैसे एक्शन में नजर आ रही है 400वीं ब्रिगेड, उसकी तस्वीर अब सामने आई है। आईडीएफ का ऑपरेशन लगातार एडवांस स्टेज में आता हुआ नजर आ रहा है। चुनौतियां जहां गाजा सिटी से आगे बढ़ने की थी, अब वो चुनौतियां दोबारा वहीं सरहदी इलाकों पर आ गई हैं, क्योंकि हमास काफी ज्यादा चुनौती दे रहा है। हमास अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये बात जो है इजराइल भी जानता है, और यही कारण है कि बार बार उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ये कह रही है कि ये जंग लंबे समय तक चलेगी। रिपब्लिक आपको जंग के मैदान से वो तस्वीरें दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा है जो अब से पहले आपने कभी नहीं देखी थी। ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। आर्मी की करीब 25,000 जो रिजर्व फोर्सेस हैं वो यहाँ पर हैं। गोलन हाइट्स का जो बॉर्डर है वो बमुश्किल 8 किलोमीटर है और इसीलिए ये एक्टिव वॉर फील्ड है। यहाँ पर बड़े हमले करने की तैयारी की जा रही है।
ये तोप के गोले हैं, जरा इनकी साइज देखिए और इन्हीं तोप के गोलों से हिजबुल्लाह के आतंकियों का इलाज किया जा रहा है। ये वो टैंक है जिसकी रेंज करीब 35 किलोमीटर है। ये मतो टैंक कहा जाता है और जिस तरफ आप बैरल का मुंह देख रहे हैं उस तरफ हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं। हम इस वक्त जिस इलाके में हैं यहाँ पर एक्टिव वॉर जोन है। यहाँ करीब 500 की तादाद में आर्टिलरी मैन तैनात किए गए हैं। ये मतो टैंक है जो हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को चुन चुन कर उनका सफाया कर रहा है। Parliament of the Hamas political bureau has been captured by the Israel Defense Forces. This comes on the 30th day of the war. Recovery of the arms and ammunition from the basement of Rantisi Hospital. Now, major controversy has erupted in Karnataka over Minister Zameer Ahmed's campaign speech in Hyderabad. Minister Zameer Ahmed, who is the minority face of Karnataka government, and he was earlier a member in Rajasthan, admitting Muslims that helped Congress come to power. Now, he has said that the Congress has appointed a Muslim speaker, and all BJP MLAs are now forced to do salam to a Muslim speaker. Take a listen to what he said. के अंदर हम लोग 9 जन एमएलए इलेक्ट हुए। मुसलमान एमएलए 17 सीट दिए थे, 17 के अंदर 9 जन इलेक्ट हुए। 9 जन इलेक्ट होने के बावजूद के अंदर 5 जन को पावर दिया गया है। जमीर अहमद खान को 3 पोर्टफोलियो देके मिनिस्टर बनाया गया है, रहीम खान को मिनिस्टर दिया गया है, सलीम अहमद साहब बैठे तो उनको चीफ विप बनाया गया है। अभी हाल ही के अंदर नसीर अहमद साहब गए, उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया है। आज तक कर्नाटका हिस्ट्री के अंदर कोई मई का लाल स्पीकर नहीं बनाया था। आज स्पीकर बनाने वाले कांग्रेस पार्टी यूटी खादर साहब को आज अच्छे जो बीजेपी के लीडर है ना, आके हमारे यूटी खादर के साहब नमस्कार करके खंडा चाहिए। वो बनाने वाली कौन? कांग्रेस। And hitting out is the BJP and JDS, who have slammed the Siddaramaiah government. Take a listen to the reactions from the opposition in Karnataka. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಸಚಿವರು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಖಂಡನೀಯ. ಅಂತ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಶಾಸಕರುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಮುನ್ನ ತಾವೊಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಮನ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಗ ತಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ಮೇಲಾದರೂ ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. No, these kind of ministers or elected representatives come in the public life. What will be the future of the constitution or the level of assembly sessions? After seeing this reaction, if BJP friends, when our assembly starts
Already they announced on December 5th, 4th, assembly will going to be commenced. On that day, if BJP parents, when speaker enter inside to the podium and if sitting on his chair, if BJP friends decided to stand to show their respect to the chair, not Qadar, respect to the chair. If this thing has happened, what will going to be the house proceedings? Who will going to answer it? Chief Minister, if he had any sense or any commitment to the Constitution, he has to take the decision. Going to, regarding yesterday's that report, going to the election commission and filing the complaint, it will not going to helpful to anybody. If this decision, any hard decision, if BJP friends take on that day, when assembly start on December 4th, what will be the situation? Correct. Who will going to reply for that? In this issue, if he had any sense, if they have any commitment to the Constitution, Chief Minister immediately direct him to actually in front of by misusing the speaker name. He is not a Congress worker. He is not belongs to one community. He is not belong to one community. He is represent. He is the custodian of 224 MLAs as a chairman. This man immediately at least express his excuse. Do you think that this is divisive politics and it will work in the 5 state elections? That will not going to affect on 5 states, but it will going to be a boomerang to the Congress party, even in Karnataka state. But for what extent it will going to be damage in the House proceedings, let us see. So Siddaramaiah has released a few documents as well regarding that CSR funds which you had requested. What is the document, brother? That is CSR fund for 2.5 lakh, 5 lakh. This is the CSR fund. Which school? I know already one school, I already picturized. Already work is going on in that school. Already small work is going on. After, from last 2 years, when election postponed for local bodies, every year, that Jilla Panchayati and Taluk Panchayati amount, each constituency MLAs, by bringing the notice to the MLAs, officers are repairing work of the schools. Already in all the constituencies, it is going on from last 2 years. This is not the new issue. By showing CSR work, actually he again laughing issue in this issue. See, I never thought that that Zamir Ahmad is so stupid and illiterate behavior. Actually, speaker post is not a ism or caste sitting there. Constitution is sitting there in that place. Every person, MLA, MLC, whoever, elected members, have to bow their head to Constitution. In the post, whoever is sitting, a Muslim, a Dalit, if Muslim sitting is a Muslim speaker, we call him as a Muslim speaker, Dalit speaker, Hindu speaker, Muslim speaker, no. It is speaker is a speaker. We have to give a respect to that position, not to the person. This Zamir Ahmad is unfit to become a minister. He doesn't know what is democracy, what is constitution and all. I demand his resignation. If not, Chief Minister immediately should sack him from the ministership. Not that we are going to oppose this issue. Congress themselves should
oppose this and his behavior. That is what I can say. There's absolutely been no sort of response from the Congress party. They have remained silent. We see that the Chief Minister has gone to Mysuru. The Deputy Chief Minister again chooses not to reply to this. So do you think that a few of the Congress leaders on this particular issue are acting according to their convenience? Yeah, of course. They are appeasing these Muslims. And how long they are going to please like this for the sake of vote bank? This is a totally irresponsible government, irresponsible Chief Minister and Congress leaders. In other news, fresh violence has been reported in Madhya Pradesh as polling is underway in the state. Two groups resorted to stone pelting, injuring one person. Here's a report. Violence was reported at polling booths of the Mani Assembly constituency in MP's Morena. Two groups resorted to stone pelting while the polling was underway. One person was also injured in the incident. Meanwhile, police has been deployed at the spot. आज सुबह यहाँ पर सूचना मिली थी कि दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया है और इसमें पत्थरबाजी हो रही है। तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची और बलवाइयों को वहाँ से खदेड़ा गया। इसमें एक व्यक्ति के सिर पर चोट आई जिसको इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है और हाल फिलहाल शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। घायल हुआ है? एक व्यक्ति घायल हुआ था जिसको इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया। कह रहे हैं कि गोलीबारी की सूचना मिली है, मतलब जो कुछ गाँव वालों कहना था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई है। Polls underway, the situation has now been brought under control. Agency report, Republic TV. Time for a short break, viewers. On the other side, after concerns on social media, Prime Minister Modi raises deepfakes issue, warns over the dangers. Parliament of the Hamas political bureau has been captured by the Israel Defense Forces. This comes on the 30th day of the war. Recovery of the arms and ammunition from the basement of Rantisi Hospital, which is the hospital of the children in the Gaza Strip, and that was occupied by the terrorists of Hamas, the underground tunnel system, the basement being used by the terrorists of Hamas, possibly to keep the hostages, as being said by the Israel Defense Forces. This speaks of the volumes that how the schools, the mosques, the kindergartens and also the hospitals are being used as their bases, the hideouts by the terrorists of Hamas, and now many of them has been busted. रिपब्लिक आपको जंग के मैदान से वो तस्वीरें दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा है जो अब से पहले आपने कभी नहीं देखी थी। ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। आर्मी के करीब 25,000 जो रिजर्व फोर्सेस हैं वो यहाँ पर हैं। गोलन हाइट्स का जो बॉर्डर है वो बमुश्किल 8 किलोमीटर है और इसीलिए ये एक्टिव वॉर फील्ड है। यहाँ पर बड़े हमले करने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस वो पार्टी है जो निवेशकों को भगाती है। क्या डर है आपको और किससे डरे हुए हैं जो आप कास्ट सेंसस नहीं करा रहे हैं? आज 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। किसानों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कांग्रेस ने कभी किया था क्या? राहुल गांधी को जो है ना पॉलिटिकल एमनीजिया की बीमारी है। एक कांग्रेस पार्टी ना देश का विकास कर सकती है ना मध्य प्रदेश का। ठीक पीछे
पीछे गाजा बॉर्डर देख पा रहे हैं जहां पर लगातार हमले तेज हो रहे हैं। आईडीएफ की तरफ से वीडियो जारी कर बताया गया है कि गाजा पट्टी में कैसे एक्शन में नजर आ रही है 400वीं ब्रिगेड, उसकी तस्वीर अब सामने आई है। आईडीएफ का ऑपरेशन लगातार एडवांस स्टेज में आता हुआ नजर आ रहा है। चुनौतियां जहां गाजा सिटी से आगे बढ़ने की थी, अब वो चुनौतियां दोबारा वहीं सरहदी इलाकों पर आ गई हैं, क्योंकि हमास काफी ज्यादा चुनौती दे रहा है। हमास अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये बात जो है इजराइल भी जानता है और यही कारण है कि बार बार उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ये कह रही है कि ये We're getting in some breaking news right now from Chhattisgarh, where a Maoist attack has been reported right now. And what we understand, it's an IED blast that has taken place in Garyaband of Chhattisgarh. That is the big breaking news, viewers. We're getting in. A Jawan has been martyred in this IED blast. Remember, Chhattisgarh is witnessing polling in the second phase. ITBP Jawan was injured and he has been martyred. That is the latest we have. It's an IED blast by the Maoists, and it's an IED blast that happened in Chhattisgarh's Garyaband. This is on polling day. Remember, it's the second phase of polling in Chhattisgarh, and a Jawan has been martyred. ITBP Jawan has been martyred on polling day. This is a Maoist attack that has taken place in Chhattisgarh, where polling is underway right now. The second phase and an IED blast. We see that one ITBP Jawan has been martyred, and what we understand is that an ambulance has been deployed from Manpur to retrieve the body of the Jawan, and this is the latest update we have right now. We are waiting more details on that, but this is coming in from Garyaband in Chhattisgarh. An IED blast has taken place on the polling day, and Jawan has been martyred there. Remember, Chhattisgarh, there's polling underway, and polling, of course, took place today in the morning. And there are in Garyaband, there have been 2 assembly seats also. My colleague Simran is joining us on the phone line for more. Simran, it's a very unfortunate news that we are learning. It's an IED blast that took place in Chhattisgarh's Garyaband. A Jawan has been martyred. What more details can you share with us? Well, yes, this is definitely an unfortunate news comes during the time when the polling had just stopped at one of the areas in the one of the polling stations called Garyaband. Remember, these are one of the 9 polling stations where the timing was scheduled to be starting at 7 a.m. for polling, because it was the Naxali sensitive zone. As we have also told that ECI had specifically taken the note of these areas to be under heavy scrutiny and the sensitive situation under control. But unfortunately, one ITBP Jawan has been martyred, and police and of course the state police. Right. All right. Thank you so much. Thanks so much, Simran, for joining us with those details. That's the latest we have. Viewers, IED blast in Chhattisgarh's Garyaband. It's a sensitive area and constituency. Jawan has been martyred in that IED blast on polling day. Time for a short break, viewers. On the other side, ex-Bharat Pay co-founder Ashneer Grover and wife stopped at Delhi International Airport. Face fake invoices charged. कांग्रेस वो पार्टी है जो निवेशकों को भगाती है। क्या डर है आपको और किससे डरे हुए हैं जो आप कास्ट सेंसस नहीं करा रहे हैं? आज 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। किसानों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कांग्रेस ने कभी किया था क्या?
राहुल गांधी को जो है ना पॉलिटिकल एमनीजिया की बीमारी है। ये कांग्रेस पार्टी ना देश का विकास कर सकती है ना मध्य प्रदेश का विकास। ये तोप के गोले हैं, जरा इनकी साइज देखिए और इन्हीं तोप के गोलों से हिजबुल्लाह के आतंकियों का इलाज किया जा रहा है। ये वो टैंक है जिसकी रेंज करीब 35 किलोमीटर है। ये मतो टैंक कहा जाता है और जिस तरफ आप बैरल का मुंह देख रहे हैं उस तरफ हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं। हम इस वक्त जिस इलाके में हैं यहाँ पर एक्टिव वॉर जोन है। यहाँ करीब 500 की तादाद में आर्टिलरी मैन तैनात किए गए हैं। ये मतो टैंक है जो हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को चुन चुन कर उनका सफाया कर रहा है। Parliament of the Hamas political bureau has been captured by the Israel Defense Forces. This comes on the 30th day of the war. Recovery of the arms and ammunition from the basement of Rantisi Hospital, which is the hospital of the children in the Gaza Strip, and that was रिपब्लिक आपको जंग के मैदान से वो तस्वीरें दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा है जो अब से पहले आपने कभी नहीं देखी थी। ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। आर्मी की करीब 25,000 जो रिजर्व फोर्सेस हैं वो यहाँ पर हैं। गोलन हाइट्स का जो बॉर्डर है वो बमुश्किल 8 किलोमीटर है और इसीलिए ये एक्टिव वॉर फील्ड है। यहाँ पर बड़े हमले करने की तैयारी की जा रही है। Welcome you watching the Friday edition of This Is Exclusive with me, Shavinson. Ladies and gentlemen, tonight we bring to you an exclusive story. This is about the co-founder, the ex-founder of BharatPay, Ashneer Grover. Remember, he's also come to prominence with his appearance in Shark Tank. But he finds himself in the dock as the investigation by the Delhi Police Economic Offences Wing has prevented him and his family members from leaving for abroad. In fact, he was detained at the Delhi International Airport along with his wife. This after an LOC, a lookout circular, was issued by the Delhi Police Economic Offences Wing, which now Mr. Grover says that there were no summons that were sent out in the past. Now the summons landed up at his residence after he was stopped from leaving the country. He says he's not a flight risk. Tonight we get you the status report that has been filed by the Delhi Police Economic Offences Wing, which largely talks about the case and what are the allegations that have been levelled against Ashneer Grover. All this and much more on this edition of This Is Exclusive. But up first, these are the headlines we're tracking for you at this hour. Over 67% voter turnout in Chhattisgarh second phase polling and 71% in Madhya Pradesh. Jawan on poll duty martyred in an IED attack by Maoists in Chhattisgarh on polling day. After concerns on social media, Prime Minister Modi raises deepfakes issue, warns over the dangers. Ex-BharatPay co-founder Ashneer Grover and wife stopped at Delhi airport face fake invoices charge.
Massive storm over Karnataka minister's communal statement on Speaker's chair. Congress under fire. Stones pelted at women devotees in New district of Haryana. Administration on alert, security tightened. It's day 6 of the large-scale rescue mission in Uttarkashi. 40 workers still trapped after more than 140 hours. Ladies and gentlemen, trouble mounts for Ashneer Grover, former managing director at Bharat Pay, and his wife Madhuri Jain, as they were stopped at the Indira Gandhi International Airport on Thursday evening while they were traveling to New York. The action comes after a lookout circular was actually issued earlier this week by the Economic Offences Wing of the Delhi Police. That's amid the ongoing investigation against the two for alleged fraud at Bharat Pay. The investigation into the alleged fraud at Bharat Pay has uncovered unexplained payments allegedly made to not one, multiple HR firms that have been directly or indirectly linked to Ashneer Grover, his wife and other members of his family. The accused allegedly used backdated invoices to move funds from Bharat Pay's account for payment of commissions for recruitment work. In fact, this document that I am holding right now is the status report that has been submitted by the Delhi Police's Economic Offences Wing, which largely talks about the multiple consultancy firms that have been linked during the investigation to Ashneer Grover's family members. A charge that has been completely denied by Ashneer Grover with regards to whether at all funds were actually siphoned or not. In fact, he's taken to the social media platform indicating two important aspects. One, he says that with regards to why exactly was he stopped by the Immigration Department. This, when the investigation began in the month of May, at that point in time, there was no lookout circular. In fact, after he returned home, once he was stopped at the airport, the summons reached his doorstep. Now, essentially, that's part of the protocol and the procedure, just for the understanding of our viewers, that once there is a lookout circular and there is an attempt that is made by an accused to leave the country, remember, a summons are usually sent out so that the person can explain as to why exactly was he leaving the country. Now, that's as per protocol. In fact, in a short while from now, we're going to put out full details of the investigation that has been carried out by the Delhi Police Economic Offences Wing. What are the charges that he essentially faces? Remember, Ashneer Grover happens to be the face of Shark Tank, has been perhaps the darling of social media too. But the reality is this: some very serious charges faced by Ashneer Grover. We look into those charges that have been leveled against him. What is it that Bharat Pay essentially has to say with regards to this entire matter? Remember, they are the original complainant in this particular case. Take a look at this report and then we put out the details of the status report. Businessman Ashneer Grover was stopped at the Delhi airport on Thursday night as he and his wife were leaving for New York. Grover and his wife were stopped at the airport over a lookout circular issued by Delhi Police's Economic Offences Wing. The notice was issued earlier this week by the agency as it is probing alleged fraud at an online payment portal. Ashneer Grover, meanwhile, has posted on social media that he wasn't served a notice till he left for the airport. Grover also added in the social media post that the notice was delivered to his house today morning. Grover has said that he will cooperate with the Economic Offences Wing. Bharat Pay, the firm Grover was a co-founder of, has filed a complaint against him claiming fraud. Bureau Report, Republic TV. Well, according to the Delhi Police, the first breaking news that we are getting in is that firms and bank accounts were opened only for siphoning funds, and 8 HR firms that have been linked to Grover family. That's point number 1 that emerges from the investigation that has been carried out. In fact, I'm holding the status report and I would just like to quote with regards to what are these firms all about, how are they essentially linked. If you simply go by this particular status report, in which they're essentially talking about the investigation, and they have
put out details of the consultancy firms. Now, these are the consultancy firms that have been named in the status report. In the first consultancy firm, Delhi Police says it is a Vardhaman Marketing, which is linked to proprietor Ashima Jain. Then you have, again, linked to Madhuri Jain, that's wife of Ashneer Grover. A second consultancy firm which goes by the name of Impulse Marketing, linked to Madhuri Jain once again. That's Grover's sister-in-law, Impulse Marketing. Vista Services is linked to Madhuri Jain's sister-in-law once again. I beg your pardon, it's Ashneer Grover's sister-in-law. Evolve Biz Serve, linked to Seema Jain, wife of Sushil Jain. Madhuri Jain, Grover's real aunt, is what the Delhi Police says. Team Source, once again a company linked to Ashneer Grover. Team Works, True Work Company, Vikas Enterprises. Now these are the firms that have been allegedly linked to Ashneer Grover. Now, what are the charges that have been leveled against him? Now, this is what the Delhi Police says from its investigation, that while he was running the operations of Bharat Pay, there were multiple firms that were opened. These firms also had bank accounts, and these bank accounts allegedly received funding in some way or the other from Bharat Pay, which is the original complainant in this particular case. They say a copy of fake invoices have also been recovered. Now, clearly, this is what the Delhi Police says. Physical verification of alleged about 33 non-existing fake vendors have also been done. It was found that addresses of 23 vendors were not proper, correct or traceable. 10 firms' addresses and credentials were found genuine. Bank account statements of these firms have been obtained, and the same is required to be thoroughly analyzed. They also make this sensational allegation after going through the company's documents. They say fake invoices, I'm quoting the Delhi Police here, fake invoices were created at a later stage after the opening of bank account of these firms. These firms were established and their bank accounts were opened only for the purpose of siphoning of funds and for causing wrongful gain to the alleged persons. Now, that's the allegation that has been leveled by Delhi Police. Let me also bring in my colleagues Harsha, who's joining us on this broadcast, and Piyush Ori, our reporters on the ground, getting us the latest details. They've also spoken to the Delhi Police Economic Offences Wing to get us more details of the searches that were carried out, also linked to this very case. First to you, Harsha, with regards to the investigation that has been carried out so far. What is it that you're picking up from the Delhi Police Economic Offences Wing? How far have they reached in terms of the investigation? Because Ashneer Grover says that there is no case against him, nothing that stands out. So, Shravan, initially, right now, through our sources in Economic Offences Wing, we have got to know that more than 15 recruitment firms were made, and during that point of time, in 2019 till 2021. And also, there were several invoices which are created, backdated, and also the bank account numbers which were associated with these invoices were created after the dates when they were raised. We have also got to know that Vikas Enterprises, a vendor through whom the recruitment of former CEO Sohail Sameer was done, it's also in question, and as the further course of investigation will be done by EOW Sohail Sameer, and Vikas Enterprises should also be questioned, because the joining and recruitment of Sohail was done himself by Ashneer and Madhuri Jain Grover himself. And also in either year 2019, how the amount of 7.65 crore was siphoned off directly into the accounts. 5 recruitment agencies account was done, which was done directly by Madhuri Jain Grover. And in total, from 2019 to 2021, almost 70 to 80 crore rupees, 80 crore huge sum of money has been siphoned off into the account into this recruitment agencies on the pretext of offering recruitment. However, Bharat Pay states that no recruitment was provided by these recruitment firms. Back to you. Let me also bring in my colleague Piyush Ori, who's been tracking this story very closely. Piyush, as I understand, summons have also been sent out. We'll put out this breaking news that I'm getting from my sources within Delhi Police, that in fact they've been asked to appear on 21st, 22nd and 23rd to basically explain the purpose of leaving the country. Ashneer Grover essentially says that there is no case that has been cut out against him. He also makes the allegation against the Bharat Pay
management with regards to the fact that these are fake charges that have been leveled against him. Also says that in terms of the shares that belongs to him, effectively goes on to indicate that while he was running the management of BharatPe, it was far more profitable, and the very fact that the company essentially owes him. So yes, Shaban, what I can just tell you is that there has been a bad blood between Ashneer Grover and the promoters of BharatPe ever since he was unceremoniously sacked. However, the key point over here is that on 11th of May, Resilient Innovation Technologies, the one company which runs BharatPe, actually filed a complaint against Ashneer Grover, and following which the Economic Offences Wing of Delhi Police began its investigation. So it was on 11th of May when the case was filed against Ashneer Grover and his wife. Now, in order to challenge this FIR and in order to quash this FIR, Ashneer Grover did take the stand of the court and he went to Delhi High Court to quash the FIR. However, that did not help, and the Delhi High Court said that the investigation in this matter should be done only after the due process of law is followed. Then only they will see that whether there is anything vicious or anything which is vitiated in this process or not. On this, just 2-3 days back, the Delhi police filed a status report in which it has made some startling revelations of how Ashneer Grover was siphoning off the funds of BharatPe. More so, it was siphoning off the funds which was paid to BharatPe, which is a startup, which was a startup then by Sequoia Capital, and was using it for his own personal benefits. And it has been alleged that how Ashneer Grover, by creating several dubious HR firms, had taken away and had siphoned off, had swindled away more than rupees 53 crore in amount. Now, Ashneer Grover, who has been silent on this charge ever since this FIR has been registered against him, took to Twitter, took to X platform and mentioned about how all these are vitiating charges. In fact, he also had a... Piyush, I'll just request you to stay on with us because I'm given to understand some breaking news now coming in. Piyush, I'll just request you to stay on. We're just getting in some more breaking news right now. My colleague Harsha getting us more details. The copy of fake invoices ranges from 2019 to 2021 that has been provided to Economic Offences Wing. More than 70 crore rupees payment was done to the recruitment companies. However, the company never provided any recruitment is what we are essentially picking up from our sources within the Delhi Police Economic Offences Wing. Now, important to point out here, Harsha, is that the charge that has been leveled is that these companies were floated for the purpose of carrying out recruitment. According to the Delhi Police, no such services or consultancy services were actually provided to BharatPe, and these were fake invoices that were raised. A total of 8 such firms that have come under the scanner. What more do you have? So, Shravan, 5 out of these 8 recruitment services are directly linked with the family members of Madhuri Jain Grover and Ashneer Grover. In fact, the father, brother, sister-in-law, all are directly representing these firms. However, what you've got to know that these firms don't exist on paper. And in the year, for example, I'd like to tell Shravan that in the year 2019, in August, one invoice was created on 7th August of 30.99 lakh. And the account number was created later on 20th August 2019. Similarly happened in November and October as well. And in the year 2019, 2022, 2020 October and September, October, and in 2021 January, February, March, April. These are the months we have got to know when the fake invoices were created, and all the invoices were backdated. And therefore, the detailed investigation is being done by the Economic Offences Wing. And however, none recruitment happened except for Suhail Sameer, who was recruited through Vikas Enterprises. We have got to know that this vendor, Vikas Enterprises, it is very close to the family of Madhuri Jain Grover and is directly linked with Ashneer Grover. And therefore, the entire length of the investigation could also be conducted around the dubious recruitment of former CEO Suhail Sameer as well. And the
sum of money which is involved is huge. In 2019, it was 7.65 crore payment which was done. At that time, Madhuri Jain Grover was herself looking into it, and therefore the charges are directly against Ashneer Grover and Madhuri Jain Grover, how they have benefited their family members by floating fake recruitment companies and through dubious transactions. Back to you. Well, in fact, let's just put out that breaking news now coming in from our sources within the Delhi Police Economic Offences Wing that Ashneer Grover and his family members have now been asked to appear before the agency on the 21st, 22nd and 23rd of November. This is part of the protocol, or rather procedure, because remember, a lookout circular has been issued and he was stopped at the airport. Largely, he would be asked to explain the purpose of leaving the country. However, Ashneer Grover has already put out a social media statement on this entire matter. He raises questions about the fact that he's had multiple foreign trips in the last few months since the investigation began. He was never stopped at the airport. This time, a lookout circular has been issued. He says it would not be difficult to prove before the court